morning, everyone. Today we'll be discussing a very important point of identifying a research problem. Because if you fail in identifying the research problem, at any point of time it can be changed, and then you have to restart your research. So you need to be very much careful in identifying the problem. So when we talk about research, it comprises of various things like defining and redefining the problem. When you are first, you need to define it, and it might happen that at many stages you need to redefine it also. Because as a beginner, it might happen that you may be uh, you maybe not having that vision how after 5 years your business will be, and how what are the hurdles in the process and everything. So it might happen that you need to redefine it, and it happens with everyone. It's not like that only it happens with the beginners. तो ये किसी के साथ भी हो सकता है कि we have started with something, and then later on we came to know कि नहीं, this is not working, we need to churn it or change it or do some changes in that. So you need to redefine it. You need to formulate the hypothesis. Now what do we mean by hypothesis? Hypothesis. Focus point is the whole research history. Okay. What else? Other things. Okay. Anyone else? Understanding and providing understanding. Anyone else? Probability, yes. In a layman language, we can say it's a shrewd guess. It's a guess. When you take a guess, yes, this thing can happen. There might be a significant difference, or while starting the problem, you are making a guess, or you are assuming that this thing can happen. So hypothesis is a shrewd guess or suggested solutions. Because hypothesis, there is null hypothesis, there is alternative hypothesis. हाइपोथेसिस का तो एक क्वेश्चन हर जगह आता है, तो उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज। बिकॉज जितना बड़ा नेम है ना हाइपोथेसिस, उसका बहुत डिफिकल्ट वाली कोई चीज नहीं है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बट व्हेन वी स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम, वी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, क्या ऐसा हो सकता है। There are many types of how, when, what of anything, something, whatever. So this is a problem. We start with a question, and we need to seek for the answer. Hypothesis is in between, where we are making guesses कि हाँ जी ऐसा ऐसा हो सकता है. So I'll also explain the sequence how research question, objectives and hypothesis, how they are sequenced. So there is the formulating of hypothesis or suggested solutions. Then collecting, organizing and evaluating data. If you are not able to collect the data properly, what problems you will face? Like many times it happens that people collect the data but they have collected it in the wrong way. So ultimately they are not able to organize it. If they are not able to organize, there is no point of doing proper presentation or analysis of data. So you need to be very much clear how you have to collect the data, what things you have to improve in the collection of data. अच्छा रहेगा if you can add points in that. More points, ज़्यादा data collect कर लोगे, there is no problem in that. ठीक है? So you can have variety of things like demography आपने ज़्यादा add कर दिया उसमें. I'm giving example of suppose attitude towards online class, बहुत basic example. Attitude towards ऑनलाइन क्लासेस, तो एटीट्यूड किस किस का हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए? टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स, वेरी बेसिक एग्जांपल। So by collecting the data for the attitude towards online classes of students, say I am collecting it for the high school students. High school students कौन से होते हैं?
See, we have to be very much specific. Okay? If I am writing in my research the target group and then adolescent, तो adolescent में मैं कौन सा बच्चा लेगी? High school, if I am writing high school, so high school means 10th or 9th. So tell me if I want to target, it's quite obvious last test का मुझे डाटा बहुत मुश्किल से मिलेगा, it's very much obvious. ठीक है? It would be difficult for me to collect the data क्योंकि if I am collecting in the month of December, school में बच्चे नहीं हैं, anything का yes. Yes, it might happen, but you need, if you are talking about adolescent, okay? So there is, in adolescent there is different age group, but it would be difficult to compare the data of adolescent and young adult. उनका आप क्या compare करें? Is it required that comparison is required or not? We have to decide. क्या आपको body for distance का what to compare different sex different groups? So it's not comparison. You are studying all this. Later on, don't do comparison. आप उस सबको study because आप like physical growth. We can compare the physical growth of a क्योंकि इनका comparison बहुत हो चुका है. जब ये theories हो ये psychology में when you study cognitive development, physical development, तो इन सब पे बहुत study हो चुकी है इनकी theories बन चुकी है comparison. Different age structures है. This is the reason why different age structures are divided. जो groups बने हैं early childhood, childhood, later childhood, then early adolescent is there, later adolescent is there. ये सब so, it's searching something like you're searching about a group like adolescents or young adults or adults. Then in that, we will compile it and give a hypothesis of that research, or we can put it in the method for our PhD. Like for example, we can doing that, or it depends on how we want to. It depends on you. Or depends on your objective. Whatever hypothesis, there is no rule of other. Rule, see, you have to define your objective. After that, only you can start. Yeah. See, that's why I was saying I will tell you the secret. The problem starts with the question why, what, or how, or anything. So these are research questions. Research questions are in qualitative terms. वो quality की बात कर रहे हैं. There are two approaches, qualitative and quantitative approach to the research. आप लोग ने पढ़ा है quality and quantitative. Science quality research is qualitative and quantitative. So if I talk something about space, ठीक है, आजकल बहुत ब्रह्मांड के fields बहुत आ रहे हैं. तो वो qualitative है कि quantitative है? और theory of relativity quantitative है. हम वहाँ तक पहुँचे हैं क्या? Is quantitative or qualitative? Qualitative. What relativity है ना? theory of relativity. Quantitative कह रहे हैं आप लोग. Quantitative, you are saying quantitative, you are saying qualitative. Right? See. Now let's talk something which is in fact. Quantitative usually what we say, which we can calculate, which we can select the data and measure it and say it in quantitative terms. Qualitative is something when which we talk about और जिनको कुछ होता जाता है, ठीक है? But उस पर बहुत अलग-अलग लोग सोच रहे हैं. Right? When I talk about space और पूरा यूनिवर्स और उस सब की मैं बात कर रही हूँ, तो वो quantitative terms में है. Now something we are talking about एक space में black material की बात की जा रही है. Black material पता होगा ना लोगों को? नहीं black hole नहीं, black material है. Black hole black material. अच्छा what is there? आप बैठे हैं, what is there between us? Distance and someone saying space. And anyone else? Is it empty space? Particles are there.
और waves are there, energy waves are there. So there are many things जो अभी calculating नहीं होती और उसमें आई एम टॉकिंग अबाउट वेव्स वही वेव्स एनर्जी की वेव्स सिर्फ अवयव और still we have not studied the whole universe in that hypothesis qualitative. So tell me things start with qualitative or quantitative? Yeah. ठीक है हाँ and when we establish many facts we come to the qualitative aspect also right and that becomes the base of some other researches right so I will just suggest in your study uh, have qualitative aspect also don't go only for quantitative ठीक है so it's not like that कि if you are talking about science अभी हम सब से सामने ही बात हुआ कि science is not only quantitative ठीक है it's somewhere it started कुछ qualitative है तो qualitative जो चीज है that those are research questions which can't be measured or which can't be answered directly. Qualitative are those things which can't be answered directly, and you may be having different answers, she may be having different answers of the same question. Right? इसलिए इंडिया में क्वालिटेटिव रिसर्च ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती है इसलिए people don't accept that. People students are ready to do. ठीक है बट आपको मैं बोलूंगी कि नहीं आपका एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे छोड़ देंगे ना छोड़ सकते हैं ना लेकिन ऐसे चीजें यू कीप ऑन ड्रॉपिंग थिंग्स ना यू वोंट हैव दैट क्वालिटी योर कोर्स तो थिंक अबाउट दोस थिंग्स आल्सो कुछ क्वालिटेटिव भी सोचिएगा तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव व्हेन वी टॉक अबाउट रिसर्च क्वेश्चंस वो क्वालिटी से स्टार्ट होते हैं व्हिच डोंट हैव एग्जैक्ट आंसर बट हाँ वी नीड टू सीक दोस आंसर then there are objectives जब मैं क्वालिटेटिव की बात करती हूँ फिर आई कम टू दो ऑब्जेक्टिव जैसे आई ड्रॉ दी हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव क्या है सपोज ऑनलाइन क्लासेस के ऑब्जेक्टिव आई वाज टॉकिंग so the objective is to find identify the attitude towards online classes of the uh, secondary students ठीक है I have changed the target group मैं high school students कह रही थी now I am saying secondary students. Secondary में 9 10 होगा. When we talk about high school, it is talking about particularly class 10. So when I say secondary students, secondary school students, then I can take class 9 का data. Right? So secondary students का मैंने data collect किया attitude towards online class. This is a purely quantitative. Right? Now next my objective will be to compare the attitude of online classes attitude towards online classes of say senior students on the basis of gender. Comparison on the basis of gender. Comparison on the basis of discipline. Maybe in ISC board comparison on the basis of groups. Right. So we have done three sort of comparisons. Now from this objective, this is purely quantitative objective. From this objective, we can draw and make the hypothesis. Hypothesis क्या बनेगा? There is no significant difference in the attitude towards online classes on the basis of gender. This is null hypothesis. When I am not giving any direction. Direction नहीं है. और male students are having more attitude towards online classes compared to the female students. This is direction or this is how does it work? वो इतना it's not it is being said that technical but मतलब इतना उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं it's very easy उसको बहुत ज़्यादा difficulty you possibly होती है so what we are doing we are formulating hypothesis तो hypothesis बनाने के लिए आपका objective बनाना होगा जरूरी and in research what we are doing
We are collecting, organizing, and evaluating data. I have seen people they have collected data in a wrong way और गलत तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं फिर डाटा में हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं So we have like this question is that we follow people like we have to be see it's a very good question he's asking me we have do we have a set of questions what we have to prepare or do we need to prepare it if we are preparing it the question is and if we are following the norm of preparing a tool I'm talking about management in humanities ठीक है education management humanities का बात कर रहे हैं so if you are preparing any tool to check anything with proper standardized way norm you can get it published आपका tool publish हो सकता है and it is equal to one book in fact it is equal to one PhD publishing a tool is equal to one PhD tool publish करना is equal to one PhD right so there are SPSS के software में AOS is there and there are EFA, CFA, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis. With the help of that, you can prepare the उसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है. But if you prepare the tool ना, आपका tool दूसरे को use कर सकते हैं. So we can use other tools. Yeah, yes. And this is the website to the government. Those tools are getting published like National Psychological Corporation exactly. There are different publishing houses there they used to publish. So वहाँ पर tool available है. If you are not using, I'm talking about standardized tools. Okay? यहाँ पे 5 लिक्विड स्केल पर अगर इंग्लिश इंग्लिश में प्रॉपर क्वांटिटेटिव टर्म्स में चेक किया जाता है कि व्हाट इज द रिजल्ट एंड अकॉर्डिंगली क्लासेस आर मेड एंड ऑल but you can prepare your own questionnaire which can be open-ended questionnaire like it can be descriptive answers वाले भी questionnaire बना सकते हैं yes ऐसी किसी को descriptive जो हम बनाते हैं जो questions जो अपने research के लिए focus करते हैं that also come under to yeah it comes under to section but उसका आपको validity check करना है वो expert से check कराने पड़ते हैं whether these questions belong मतलब as per like आप लोगों ने मालामाल की मूवी देखी है for example that movie starts with a description this is the village and this for example is the most intelligent person of this village so he goes for cancer therapy first question he asked के first question he asked के आपकी शादी हो गई she said no फिर बोलते हैं आपकी कितने बच्चे तो we need to be very much specific कि जो हम पूछना चाहते हैं वो तो वो चेक कर पाना पड़ता है there is a procedure होता है and it's a very long procedure but if you go through it that आपको की PhD के बाद that would be a great to take away after your PhD and this form of part of statistics yeah we are required it's purely quantitative it's required and it's not that difficult yes see, there are basically parametric tests and non-parametric tests. So, after your data जब collect होके आता है, you need to check these things, normality, homogeneity, and all that. उसके basis पे आप क्या करेंगे formula करते हैं. So, it's there in your statistics portion, but though it's there in statistics portion, though everything is there in the coursework, make it a point to go through different sort of workshops. बहुत सारे वर्कशॉप ऑनलाइन मोड पे हो गए 200 रुपए 500 रुपए बहुत सारे वर्कशॉप so throughout the PhD keep learning things keep doing things it's not only limited to आपके 3 years हो गए नहीं हाँ experiences is there yeah there are many software experiences में extended version is there demo right एवं में SEM किया जाता है structure equation model SEM you just see AU का students और जामिया के students वहाँ के research scholars जितना dynamic way में काम कर रहे हैं तो वो don't only depend on the coursework में क्या पढ़ाया जाता है throughout your the PhD keep doing workshops शाम के टाइम में बहुत सारे benefit होता है बहुत कुछ सीखते हो बहुत सारे सॉफ्टवेयर yes कुछ भी statistics analysis
finding the compare, you need to compare or finding the similarities now. Workshop बहुत सारे tools हो गए करना चाहिए मुझे हाईवे and add but keep doing जहाँ पर भी research methodology की workshop होगा 10 days का just do because ये चीजें ना it needs revision and revision because आप लोग सब हाँ there are and if you are not अभी आप current situation current जो चल रही है उससे नहीं रहोगे तो फिर आप पीछे हो so you need to be updated and upgraded and don't think कि आपकी गाइड को चीजें नहीं पता है तो आपको पता नहीं आपको अपग्रेड don't think about what the guide knows and लोगों को experience है ठीक है तो गाइड होते हैं they just see and they find के what is the error in it chat में किसी से लिखा है कैसा पता है within fraction of seconds right तो आप अपने आप को अपग्रेड करते हो it's your belief right so there is evaluating of the data and then there is making decisions. Then you do the finding and you need to make the decisions. Conclusions are there and lastly careful testing of the conclusion whether we need that we need to see whether what hypothesis we have made क्या hypothesis पे वो चीजें fit हुई है कि नहीं right तो ये सारा प्रोसीजर करके रिसर्च होगी clear now so when we talk about knowledge ठीक है ये कोई भी ज्ञान की हम बात करते हैं तो इट स्टार्ट्स व्हेन द इंडिविजुअल पब्लिक और गवर्नमेंट और experts identify certain inadequacy in certain areas of knowledge. I am giving a very basic example. मच्छर जब हमें काटते हैं तो हम क्या करते हैं? What are the different solutions that तो पहले गांव में क्या होता था गोबर के उपले लगाए जाते थे तो वो नजर जो गाइस ना जो उसकी लगती तो वो टोटल खा गया वो ग्रीन कलर का है वो रेड कलर का बॉडी आ गया इट्स डिफरेंट शेप फिर वो लगा नहीं वो क्रिएटिंग स्मोक देन वो ऑल आउट देन फोटो वो सारे ऑल ठीक है तो ये मार्केटिंग होता है marketing what is marketing identifying the problem कितना कोल्ड ड्रिंक के ऐड में क्या बताते हैं लोग कि बहुत धूप है और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो सबको मन हो रहा है कोल्ड ड्रिंक पीने का दैट इज वहाँ की प्रॉब्लम बहुत हो तो वहाँ पे क्रिएट की गई तो आपको आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम वी नीड टू थिंक कि ये जो आपका जो भी इंडिविजुअल्स है पब्लिक गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स है वहाँ कुछ इनएडिक्वेसी है समथिंग व्हिच इज लैकिंग आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज की जरूरत है बिकॉज इफ योर प्रोडक्ट इज बिग आप ऐसी रिसर्च करेंगे सीबीसीएस पैटर्न आएगा आपको पता है 10th में क्लास में उसके लिए सीबीसीएस पैटर्न आएगा आज से 7 10 साल 10 ईयर्स पहले सीबीसीएस पैटर्न आया था जिसमें क्लास 10th में बच्चे को फाइनल बोर्ड एग्जाम ही देना है तेरह डिफरेंट एग्जाम ग्रेडिंग सिस्टम था ठीक है ये शायद हाल से 10 ईयर्स पहले आया मेरे पहचान में एक लड़की है उन्होंने उस पर रिसर्च की जब वो आया था ठीक है तो रिसर्च उसकी 22 ईयर्स में कंप्लीट हुई लेकिन वो पैटर्न फ्लॉप हो गया वो 3 साल में खत्म तो जस्ट इमेजिन करिए उनके वाइवा में वो चीज होनी है जो एक पैटर्न आया और खत्म हुआ अब आप कोविड का आपकी थीसिस में कोविड का डालेंगे पॉइंट उसका आप इफेक्ट देख सकते हैं और कोविड पर आ रहा है उस समय कोविड को देर उससे कितना उससे कितनी रिसर्च होगी राइट अब आप देख लीजिए पोस्ट कोविड पे सब right so you need to be very much careful with what is the inadequacy in the areas of knowledge आप जो पढ़ना चाह रहे हैं आपको कोई टॉपिक तैयार है तो दैट डजंट मीन
you in the society or in that area or in that domain. It's not like that. Many excessive studies are already being done. So the problem is then put up the competent authorities. When you identify the problem, you need to present these problems to the competent authorities for the approval and support. Why we need uh, their approval? I mean, if I identify the problem, मुझे क्या जरूरत है competent authority approval? What is the need? Yes, they are expert. Yes, check whether it is whether it's latest or not, or whether it's correct or not, or whether it's feasible or not. Because as a scholar, you people are a beginner. आप लोग beginner है और आप लोग जो thesis लिखेंगे ना, that thesis is written तब आप लोग when you will be submitting your final thesis, then it can be said that this is a thesis written by an expert or an expert. Now, when you come to that position, after facing all these things, so the final format, it can be said that it is written by him. So, more when you do the research, ये आप PhD करते हैं ना, तो actually आप PhD research नहीं कर रहे, पूरे प्रोजेक्ट में आप कर भी नहीं, you people are just learning it. And when जब आपके स्टूडेंट्स होंगे, लोग जब करेंगे, then you are the actually right? So the approval of the competent authority is very necessary and the support is necessary when the proposals are successfully approved. Like those who are presented the synopsis at the time of interview. आप लोग ये मत समझिए कि आप लोग का वो प्रपोजल भी फाइनल था और बहुत अच्छा था इसलिए आपका पीएचडी में डूबे there are many other maybe there will be less candidates there are many factors. It's not like that कि your proposal was very star type of proposal इसकी वजह से वो आपको so work on rework on that proposal work on few other proposals also. If you are working on both proposals दो चार और proposal बनाएंगे तो don't think it's a wastage of time. You can have a small paper on those later on if it is not being used. ठीक है and always keep giving ideas to people. Don't share your ideas. Don't share your work at the beginning at least, but keep giving ideas to the people. क्योंकि ideas is like a वो आप देते नहीं रहेंगे तो अंदर बची रहेगी, ठीक है? तो उसका बाहर आना भी जरूरी है. Then then the successful proposal are being carried by the researchers and with their experiences and skills, research findings are produced. When you complete the thesis, you will get substantial findings. Findings मिलेगा आप लोगों को. वो findings का use होता है larger scale पे policy making के लिए by the public and by the government. ठीक है बहुत सारे लोग बातें करते हैं मुझे रिसर्च ऐसा बताती है वो ये रिसर्च होती है जो आप लोग कर रहे हैं ठीक है तो रिसर्च आपकी वही फाइंडिंग होती है जो बताती है बट बी वेरी मच केयरफुल टू डू थिंग्स इन एन ऑथेंटिक वे रिसर्च का जो डाटा कलेक्शन है एज आई सेड के रिसेंटली आई केम अक्रॉस तो डाटा कलेक्शन बहुत गलत था और डाटा फंसी उन्होंने बहुत गलत किया था फाइनली he has to do all this manipulation in the data of the results कैसे आएंगे आप इमेजिन कर सकते हो ठीक है वो ऑथेंटिक नहीं है और ऑथेंटिक रिजल्ट्स की बात ही कुछ और होगी यू विल रियली सी क्या वेरी टाइम्स यू विल अवेट टू सी कि सच अ बिग डिफरेंस इन द रिजल्ट so what is a research problem? It is a condition that arouses the curiosity in the researcher. It is a condition that fuels the mind of the researcher with a sense of wanting to know more, to challenge or to substantiate the existing body of knowledge. जो already existing body of knowledge है उसमें आपको addition करना है. But there are two things in this.
either you can add to the existing body or you can think about new concept which is not much the novel concept which is not already much existing. Like थोड़ा सा existing है होगा, but not much. Like if I talk about online classes, so what do you say online classes बहुत पुराना concept है कि नया concept मार्च 2020 में कोविड की बात हुई थी जुलाई 2020 तक कम से कम 5,000 पेपर्स आ गए थे 3 months ऑनलाइन क्लास so what do you say 3 years old now after 3 years or 4 years 3.5 years ऑनलाइन क्लासेस पे अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा है जिसमें लेकिन अभी पिछले हफ्ते हमारी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस चली रही है हमको उससे जब ऑनलाइन सेशन हुआ ना हमने एक चीज सोची इसमें भी हम कुछ नया डाल सकते हैं हाउ टू मेक द ऑनलाइन सेशन मोर एंगेजिंग इस पर काम बहुत कम हुआ उसमें एंगेजमेंट कैसे हो ठीक है ऑफलाइन क्लासेस में भी नींद आती है सबको होता है ना हाँ तो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ कितना अटेंडिव तो वहाँ एंगेजमेंट कैसे हो रहा है अटेंडेंस कैसे हो रहा है क्योंकि हम घंटों तक रील्स देखते हैं वाई था क्यों है It's not interest, man. It's not interest. No one is created in that and anything that is butting quick is negative or like nothing. हाँ ठीक है हाँ बेबी जब something तो थोड़ा टायर टायर आ जाता है ये तो यू टॉकिंग अबाउट व्हेन ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं ये है ना उसकी बात है ना छोटे बच्चे बहुत घंटों तक रील्स कैसे देख सकते हैं जबकि आई टॉकिंग अबाउट अटेंशन स्पैन ठीक है एक 2 आवर्स का क्लास है तो नींद आएगी बोर आएगी थोड़ा सा आप लोग मूव करने का सोचेंगे थोड़ा मन होगा उठना चाहे ओके सम गेम इज देयर एक गेम ठीक है रील्स तो रील्स 30 सेकंड का वो हटा के इफ सम गेम इज देयर ठीक है हाँ ओके ओके अच्छा if I'm talking about the 10 years 7 years right लोग बहुत तेज जगह तक गेम खेलते हैं अच्छा गेम्स आर गुड गेम खेलना चाहिए ठीक है सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन इंडोर आउटडोर इंटरेक्टिव क्लास है इंटरेक्टिव गेम है इंटरेक्टिव है और ऑनलाइन में इंटरेक्टिव नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है सी हाँ यस Yes, I will call the system. See, when the teacher is teaching in a class, कितना मूवमेंट करेंगे कितना जैसे जरूरी नहीं सारे टीचर बोल रहे हैं ठीक है हम एजुकेशन से तो भी लोग टीचिंग फील्ड से ना तो चीजें कम हो रही है बट व्हेन गेम इज देयर ना वहाँ पर एवरी 3 सेकेंड चेंजेस आ रहे म्यूजिक चल रहा है और
changes हो रहे हैं उसके colors and all such things. There is a continuous change. This is the reason वो attention span बच्चे का वहाँ पे बढ़ा है. Why? This is the reason. Major reason. But online class में as you people have pointed out कि there is no stimulus there is no sound. So this is the reason why it becomes boring a lot. Is attention different from focus? Focus attention Attention span तो कम हुआ है. हाँ. फोकस करने की वृत्ति चली गई. इतना ज़्यादा ये बहुत Yes, there are many things. So again, when we talk about Ph.D, so we are focusing on one topic, and we do deeper understanding in concept. Okay. So so we need to clarify the doubts, to find new answers and solutions, and to determine the facts of certain problems, and to develop new theories. New theories that we have got सकते हैं to develop a new theory. So I suggest कि try to keep some qualitative aspect of your research. So qualitative चीजें उस पर भी theory बनती है, तो quantitative में पूछ सकते हैं, तो तब वो theory बनता है. Like if I give example, हमने workshop की थी. In that workshop they told us कि prepare a paper frame. पेपर का फ्रेम बनाइए और आप उसको प्रूव करिए कि your frame is best. Now best is something which is qualitative. अब इस बेस्ट को प्रूव करने के लिए we have done many activities. हमने उसको 10 बार ट्राई किया यहाँ से वहाँ तक, कि मैंने इसको 10 बार भेजा है तो हर बार उसने टारगेट को अचीव के वहाँ तक गया. This way that paper frame को we have proved that this is the best frame. Qualitative को हमने quantitative के साथ मिक्स किया, right? तो तब वो theory बन सकती है. What things you need to consider while identifying the research problem? There must be an individual or group which has some problem. So, सिर्फ एक जन की actually problem नहीं होती है. It should be a problem of group, right? Then there must be some objectives to be accomplished. Problem should be like that उसको आपको solve करने के लिए objectives बन सके. ऑब्जेक्टिव उसके बना सके. एनीथिंग कुछ भी आप प्रॉब्लम खोलेंगे तो जैसे मैंने कहा वहाँ अंधेरा है तो उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव को आप उस तरह से गाइड लगा देंगे. गाइड करके ये बन गया और नहीं किया, राइट? So that problem can be solved with the objective. There must be an alternative course of action for obtaining the objective. एक ही objective नहीं, objective को solve करने के लिए there should be different solutions to solve that objective, and there must be a doubt with regard to the selection of alternatives. That's why if doubt is there, then we used to make a guess, and then we prepare a hypothesis. Right? तो मेरे को doubt है कि मेल फीमेल में difference आएगा कि नहीं आएगा, तब मैंने hypothesis बनाया. There may be some situation to which the difficulty of problem can be solved. So then only we can say it, yes, this is the research problem. You people have identified any variable? कुछ variables type किया आपका मन अपने लिए? It's your quizzes, it's your work, ठीक है? If you have not done, then do it any time. Otherwise, RDC के एक दिन पहले सोचेंगे कि हम we should solve this thing. So let's come to these points. Importance of a research problem. So there are different things in this. First, there is topic. Topic is something for which you will be there with the topic throughout your thesis. So you need to be very much specific with what topic you are using in your research, and topic should be interesting enough. बहुत बार ऐसे होता है कि गाइड ने एक एरिया में काम किया है, तो गाइड आपको बोलेगा कि मैं तो इसी एरिया में काम करता हूँ, फिर क्या करेंगे आप लोग? वही, अगर आप समझा नहीं पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी. समझाने का मतलब लड़ना नहीं होता है. समझाने का मतलब ये होता है कि अगले को समझ में आ जाए, तभी कहा जाएगा कि हाँ आपने समझाया. तो आप तक किसी को भी कोई चीज कब समझा सकते हैं? कोई भी आपकी कब सुनेगा? जब आपने इस पर वर्क किया है, राइट?
आपके मन में कुछ चल रहा है विदाउट वर्किंग, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी एक्सपीरियंस गाइड होते हैं, आई गिव वन एग्जाम्पल। एक बार मैं अपने गाइड के पास गई, तो मैंने बोला मैम ये चीज़ है, ठीक है। देन आई वेंट, फिर मैं वापस 5 मिनट के बाद गई, तो माई गाइड टोल्ड के मेरे को पता था आफ्टर 5 मिनट विल कम अगेन, ठीक है। तो दे आर हैविंग दैट मच विजन, दे आर हैविंग दैट मच एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस एंड ऑल सच थिंग्स। So if you are confident enough on a topic, then you can take a stand, and you can also extend the work in the area which your guide is having. So it's not always कि नहीं मुझे इसी पे काम करना है, you need to think and rethink what you need to do, but the topic should be interesting, so that because you need to be with your topic throughout your, not only 5 years, throughout your life. Whenever you go to any of the interview for the assistant professor, associate professor, wherever, they will ask you what is the topic of your thesis. Fine. अभी मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू दिया था, तो दे जस्ट टोल्ड मी टू एक्सप्लेन द वेरिएबल। जो मेरे टॉपिक का वेरिएबल था, ऑल 11 मेंबर्स वर देयर इन द पैनल, देवर उन सबके लिए वो वेरिएबल न्यू था। तो आई हैव, बिकॉज उन लोगों को डेमो भी देना था, तो दे हैव टेकन द डेमो ऑन दिस टॉपिक ओनली। सो इट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर मी, बिकॉज जिस पर हमने 4 साल काम किया उसको आपको 2 मिनट में 3 मिनट में बताना है। तो इट वाज अ लाइक, हाँ इट वाज अच्छा रहा मेरे लिए बहुत। सिलेक्शन नहीं हुआ, बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सो यू, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, टू अंडरटेक द टॉपिक दैट इज ओवरडन। दैट मीन्स यू नीड टू टेक केयर that whatever topic you are taking, and when I say topic, that means I am specific talking about variable, ठीक है। वेरिएबल के आगे आप लोग टारगेट ग्रुप लगाते हैं, उसके आगे स्टडी लगते हैं, देन यू कैन ऐड डिफरेंट वेरिएबल्स आल्सो, राइट। So if you are taking something which is very novel, so it's better to take only one or two variables, fine. But if you are taking something which is not that new, बहुत ज़्यादा न्यू नहीं है, तो उसमें आपको कुछ नया एलिमेंट ऐड करना होगा, कुछ नया टर्मिनोलॉजी देनी है, कुछ नई थ्योरी देनी है। यू नीड टू ऐड समथिंग न्यू टू दैट। सो इट इज, यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी आती है, बिकॉज देयर इज अ बिग प्रॉब्लम रिलेटेड विद प्लेजरिज्म। आप लोगों को पता होगा प्लेजरिज्म का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें आप देख रहे हैं, तो वो प्लेजराइज होगी ही, क्लियर। देन नेक्स्ट इज योर, आई जस्ट सर्कुलेट द अटेंडेंस। So next there is expertise, right? When we frame the questions at the beginning, or when we talk about research questions, so it's not an easy task to think that it, or it's not necessary that in future it becomes meaningful or sustainable research. जरूरी नहीं है कि आगे जाके वो बहुत अच्छी रिसर्च बने। तो सिलेक्टिंग और फाइंडिंग द क्वेश्चन और आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन इज नॉट एन इजी टास्क। So to make it more meaningful, you need to understand the subject properly. आपको वो सब्जेक्ट प्रॉपरली पढ़ना जरूरी है। yesterday we have discussed कि you need to refer to the core books, इंट्रोडक्टरी बुक्स और एडवांस लेवल बुक्स। वो कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। व्हेन आई टॉक अबाउट एकेडमिक बॉयल्सी, सो फर्स्ट मेरी, आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, राइट। तो मेरी फोर्थ आरडीसी थी, थर्ड और फोर्थ आरडीसी थी। दैट एक्सपर्ट आस्क्ड मी व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल्सी। आई वाज नॉट एबल टू आंसर। मैं एकेडमिक बॉयल्सी में मैंने बहुत सारा काम कर लिया, बट आई वाज नॉट एबल टू आंसर व्हाट डू यू मीन बाय बॉयल्सी। मुझे बॉयल्सी पहले पढ़ना जरूरी था, राइट। तो वो, और दिस इज द रीजन मैंने अपने थीसिस में पहला लाइन बॉयल्सी एक्सप्लेन किया। सो फॉर एनी टॉपिक यू नीड टू
understand that concept very well. Only then you'll be able to define it, and then only you'll be able to go in detail. So a preliminary survey is also important. A pilot survey is important to have the clearly understanding of the research problem. रिसर्च प्रॉब्लम का पायलट सर्वे कैसे करेंगे? आपने टॉपिक बनाया, फिर आप टॉपिक को क्या छुपा के रखते हैं बहुत दिन तक, मेरा टॉपिक कोई जान ना ले, उसको इतना छुपा देते हैं कि उसका इवैल्यूएशन नहीं हो पाता है. So it needs critical evaluation. So it is a really bad situation that you have worked on your synopsis, and then at the time of presentation, two three panelists they are saying कि नहीं this topic is very old. Actually it is old. It's not like that कि लोग आपसे गुंडा निकालेंगे. Don't ever think that. If anybody is saying anything on your research or doing critical evaluation, that person is wasting his or her 10 minutes, 15 minutes of time in reading your work and then explaining you. Right? So take that evaluation, critical evaluation positively. So आप अपने अपने टॉपिक का इवैल्यूएशन करवाइए, उसका पायलट स्टडी करिए, सोचिए कि क्या जरूरी है ये चीजें कर रहे हैं हम. Then available, you must be very much clear whether the data will be available or not. अब क्लास 10 के बच्चों पे मैं रिसर्च करने का सोची, no school will allow me to entertain. Uh, One of my students, a research scholar in the department, she has taken a topic on transgender. तो वो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट मिलेगा आप लोगों को स्कूल में? स्कूल में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट कैसे मिलेगा आपको? इट्स नॉट फीसिबल ना. और जो ट्रांसजेंडर की सोसाइटी में हो गए तो वो बच्चे भी पढ़ने जा रहे हैं नहीं जा रहे, कितना उनको देर आर मेनी इश्यूज प्रॉब्लम्स. तो स्टूडेंट ट्रांसजेंडर हम पढ़ सकते हैं क्या? तो वी नीड टू चेक वेदर डाटा इज अवेलेबल और नॉट, बिकॉज your work will be a flop work if data is not available. क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? फिलोसफिकल रिसर्च थोड़ी कि किसी की कथा बतानी है आपको और दिस पर्सन वाज लाइक दैट, इसका रिलेवेंस क्या है प्रेजेंट उसमें. इट्स नॉट लाइक दैट. सो डाटा नीड टू बी देयर, एंड डाटा भी देयर आर सेकेंडरी एंड प्राइमरी डाटा. तो सेकेंडरी डाटा भी उसका रिलेवेंट है कि नहीं है. सेकेंडरी डाटा पे तो बहुत लोग रिसर्च करते हैं. प्राइमरी डाटा आप उसको कलेक्ट कर पाएंगे वो भी इम्पोर्टेंट है. लाइक ईवीएस के कोई स्टूडेंट है एनवायरमेंटल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस में उन लोगों को सैप्लिंग का हाइट चेक करना पड़ता है और बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती है. तो वेदर will you be able to do that thing? We need to do that thing, but we need to check whether it's there in our purview or capacity or not. Then whether your work is relevant or not. उसका relevance कितना है? आप रिसर्च प्रॉब्लम सर्च कर रहे थे, वो सच में रिसर्च करने के लिए लायक है कि नहीं है? कुछ भी थोड़ी रिसर्च करेंगे. हाँ, वेदर लाइक यू सी ना आज की डेट में न्यूज कितनी इरेलेवेंट आती है. न्यूज तो कितना लोग हम बैठ के न्यूज देखते हैं. कुछ न्यूज चैनल हाफ एन आवर शायद देखते हो कि योर स्पेसिफिक चैनल इज देयर, और इफ यू आर इन ट्रेडिंग देन यू कैन सी द होल डे. स्टॉक मार्केट पूरा दिन देख सकते हैं ट्रेडिंग में हो तो. हाँ, तो हाफ एन आवर हार्डली, दैट टू बी यू मस्ट बी वेरी मच सिलेक्टिव कि बेस्ट न्यूज कौन सा होगा. सो बिकॉज वेरी इररिलेवेंट न्यूज इज गिवन. तो आपका रिसर्च रिलेवेंट है कि नहीं है इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. योर टॉपिक इज रिलेवेंट और नॉट, and it should be with the constant demand. जो मार्केट में चीजों की डिमांड चल रही है, इट शुड बी कॉन्स्टेंटली इन डिमांड. ऐसा ना हो कि 1 या 2 साल में चले जाए. लाइक आई एम गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ सीबीसीएस पैटर्न वाला. दैट वाज इन फैशन एट दैट टाइम, बहुत ज्यादा फैशन में था तो उन्होंने कर लिया. बट इट वाज अ वेरी लाइक बहुत खराब लग रहा था. वाइवा में शी वाज टॉकिंग अबाउट सीबीसीएस विच 2 साल पहले तो बंद हो चुका है. फाइन. Then it's very important, ethics need to be followed. You need to take those topics जो unethical नहीं हो.
it should not be opposed to any group of people or any organization. Plus, the data which you are collecting, it should be ethically collected, and plus those involved in data collection, you need to maintain the privacy of that data. You need to maintain all these things. You need to respect the participants' time, those who are giving interviews, uh, whatever answers they are giving, like clinical psychology में तो आपको डाटा का पूरा जो पेशेंट है उसका पूरा डाटा आपको मिलेगा, तो वहाँ पे आपको मेंटेन रखना है प्राइवेसी ऑफ दैट पर्सन. नेक्स्ट इज वेयर यू कैन फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम. आप बताइए रिसर्च प्रॉब्लम आपको कहाँ मिल सकती है. Where you will find the research problem. You need to find it. आपको find करना है. कितने लोगों ने find कर ली है? Because I feel very much confidence in class. टेंशन नहीं लग रहा है आपको. बेटा ये ओवरनाइट काम नहीं होता है रिसर्च का. ठीक है, हमने भी एक ऑडिट से ओवरनाइट कर दी थी बट वो बहुत खराब हुई. ओवरनाइट काम करने वाला सिस्टम मत रखिएगा. तो ओवरनाइट आर्टिस्ट के हैक होगी पूरे होगा. ये तो ओनली आपका फाइनल और किसी का फाइनल किया है. तो वेयर यू विल बी गोइंग टू फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम. आपका भी फाइनल कहाँ जाएंगे रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए. आपको ढूंढनी है. तो आपके आसपास ही होती है प्रॉब्लम. आपको सोचना पड़ेगा. सबसे पहले तो एक इंटरेस्ट का डोमेन फाइंड करो. कौन सी इंटरेस्ट आपका सर्च एरिया क्या है जिस पर आप काम करना चाहते हैं. लाइक मैनेजमेंट में there is marketing, HR, finance, और क्या है ऑपरेशन. ऑपरेशन के लॉजिस्टिक्स और डिजिटल. तो उनमें से आपने आइडेंटिफाई किया कि एजुकेशन में there is psychology, philosophy, education technology है. और अदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक से बताइए आपका कौन सा है. मैनेजमेंट. हाँ, फाइनेंस, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी और कंप्यूटर साइंस क्या. आईएएस क्या. इंटरनेशनल रिलेशन. ठीक है. ये हाँ. और मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग. हाँ. तो वेरी विल आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. वर्किंग नॉर्मल मशीन में आप फाइल कर सकते हैं. ठीक है, कहाँ वर्किंग है क्या है उस बेसिस. ठीक है. तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच योर गाइड. ठीक है. if you are not able to identify things yourself, you can approach guide. आपके supervisor को कि where, how, or what should I, on what topic should I start with. ठीक है. But don't expect guide आपको 4-5 options देगा फिर आप उसमें से choose करेंगे. It's your work. It's your PhD, right? So you need to work on it and think about the topics. So there is an option. You can always visit your research supervisor. You can visit the professors and seniors. उससे आप पूछ सकते हैं. ठीक
किस पर हमें वर्क करना चाहिए, व्हाट इज द लेटेस्ट। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था, yesterday I have only Google on the discipline latest trends in education जैसे मैंने फाइंड किया था। You can be little bit more specific, right? If I am searching latest trends in management, so I can also search latest trends in human resource management. We can be more specific. आप लोग भी अपने हॉस्टल पेपर हॉस्टल थर्ड पेपर लिया होगा, थर्ड पेपर दैट इज योर डिपार्टमेंटल पेपर, दैट इज वो आपका ट्रस्ट एरिया होगा ना क्या, उस पर भी आप कर सकते हैं काम, उनमें भी लेटेस्ट ट्रेंड यू कैन फाइंड। देन लिटरेचर इज देयर, वी हैव डिस्कस्ड yesterday everything। Then there are research funding agencies. So there are two things. Either you are working on something and you are expecting कि हाँ इससे आपको कहीं फंड मिलेगा, or some funding agencies are there and they are having their topics and areas on that project also you can work. So research funding agencies also can give you the problem and you can work on those in those. This is a good option. Let's be more specific of this thing only. Uh, बहुत दिखाई दे रहा है। It's not getting changed. Same ही होगा इसमें। It's not getting changed. I'll just read out what is this. First is and we are more specific where you can look for the research problem. First is your personal interest and sense of engagement. You need to identify the interest. You have selected that third paper. सबका इंटरेस्ट में ही होगा ना थर्ड पेपर, वट एवर यू हैव सिलेक्टेड। अगर वो मजबूरी से भी है तो देन यू कैन गो टू द सेकंड ऑप्शन, सेंस ऑफ एंगेजमेंट, वेयर यू आर एंगेज्ड। So you must be busy in, like those who are working, so in which area they are working, they can identify the problem there, right? So basically when we talk about the research, it's an intellectual activity and it's a longer period of time. It's a rigorous activity also. So you need to give more attention and you need to work on it, and you can't work on it all in a hurry. So it's a time consuming process. So it is very important that you should have personal interest in that. क्योंकि अगर आप बोर हो गए अपने रिसर्च से तो फिर तो रुक गई फिर, ठीक है, कोई कुछ नहीं करता, आपकी रिसर्च आपको ही करनी है। So research demands undivided attention and it makes the researcher indispensable to the research problem. You can't separate yourself from the research problem. It's an indispensable thing. So you need to select only that thing for which you can give your time, energy wholeheartedly. Then second is consultation with the expert. So in the beginning, it might happen that you start with very ambiguous statements. जब रिसर्च का प्रॉब्लम लिखा जाता है, हम लोग भी लिखते हैं तो उसको बहुत बार फ्रेम और रिफ्रेम करते हैं, बहुत बार। और जब आप किसी को एक्सपर्ट को दिखाएंगे तो वो वहां पर भी बहुत बार फ्रेम और रिफ्रेमिंग होगा टू गेट द बेस्ट। एंड इट ऑल्सो हैपेंस दैट आफ्टर 1 year or 2 years इट कैन बी रिफ्रेम्ड अगेन, बट मेक श्योर टू स्टिक टू द वेरिएबल्स। उसके टर्म्स आप रिफ्रेम कर सकते हैं बट अपना वेरिएबल चेंज ना हो वो कोशिश करिएगा। जिस पर आप काम कर रहे हैं उसी पे काम करिए, इसलिए थोड़ा अच्छा वेरिएबल उठाइए स्टार्टिंग से।
Then you can do review of your previous studies. Like yesterday we had done the whole session on this thing. You can always review the things or up to Google से और few websites yesterday we have discussed. उस पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है भाई. उन टॉपिक से आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं. रिसर्च गेट पर एजुकेशन की बात करें तो एरिक इज देयर एंड इंजीनियरिंग में बहुत सारे. You must be aware of what is the demand from the people and the community. Our next point is demand from the people and community. What they are expecting. Marketing students can work on that. Marketing students can work on that. What is the demand? एक टर्म है exit interview market management में. Then in biosciences and bioengineering in chemistry, what is being demanded by the public, what they want. Then demand from the government and civil society. This political science students can work on this thing. What is the demand of this civil society and what is the demand of the government? आप लोग से वो क्या expectation कर रहे हैं? Political science students, economic students, humanities students can work on that. Then next is relevance to the contemporary social, political and economic situation. It should be relevant to the present situation, to our society, to the political and economic situation of the country. It should be relevant. The problem should be relevant with that. बहुत ज़्यादा irrelevant. Like when we apply for the project, हम IT से साथ ही project के लिए apply करते हैं, तो हमारा project select नहीं हुआ. हमने देखा ना जितने भी project selected थे, they were all related with the present schemes. Government की जो schemes है, उनसे ही सारे projects related थे. So that means already scheme is working and already projects are also there in uh, for the scheme. That means वो पैसा सही जगह पे यूज हो रहा है प्रोजेक्ट का, क्योंकि स्कीम तो ऑलरेडी वर्किंग में है और स्कीम का अच्छे से इवैल्यूएशन भी हो रहा है थ्रू प्रोजेक्ट by taking any of the specific area. So you can always look what is there, what are the government projects going on, but make sure that those are long-term projects. Short-term projects पे नहीं. Or you can do the comparative analysis of the different projects also. And projects का use so you can do it in different domains also. It's not only humanities or I'm not talking only about all sides. आप किसी में भी उस पे work कर सकते हैं. So coming to the next slide. Steps to identify the research problem. First, you need to identify the broad domain of inquiry in which you are working. We had discussed it yesterday, like psychology is there. So, what is the latest trend in psychology? What are the latest trends in management? What are the latest trends in human resource management? You need to identify the broad domain in which you need to work. और little bit specific you can become by selecting the thrust area जिसमें आप काम करना चाहते हैं. अच्छा, be this that much flexible enough to change the thrust area also. आपने qualities of a good researcher पढ़ा? Quality of a good researcher एक बार पढ़ लीजिएगा. उसमें एक पॉइंट होता है flexibility. Researcher should be flexible enough. Yes, researcher should be flexible enough that in case he should have that much vision that if change in topic is required, he can do the change. उसका flexibility उसको रखनी चाहिए कि सही टाइम पर उसने टॉपिक चेंज कर दिया. Next is understand the nature and the scope of problem. Just writing the problem और इसमें फ्रेंड ने सजेस्टेड कि इस टॉपिक पे काम करो तो जरूरी नहीं आप कर पाएंगे. आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है. उसका नेचर आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो व्हाट इट इज रिफ्लेक्टिंग, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द स्कोप. वो प्रॉब्लम कहाँ तक कितने क्षेत्र तक फैला हुआ है. देन नेक्स्ट इज determining the feasibility of the study of the research problem. Determine the feasibility.
You need. This is the reason why we need always need expert. So the researcher, you all need to able to answer why this problem statement. Uh, where what can be the restrictions of this problem statement? Like in a department, recently we have tried one new thing. एक नई चीज हमने ट्राई की है. सो आई एम ऑल्सो कंफ्यूज और मेरे को भी अभी बहुत विजन क्लियर नहीं है कि उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा. बट वी आर रेडी कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देन आई एम हैविंग अ बैकअप प्लान फॉर दैट. बट वी नीड टू ट्राई. हमें ट्राई करना है, उस पर आगे वर्क करना है. सो वी शुड बी वेरी मच अवेयर दैट व्हाट टू व्हाट एक्सटेंट आवर प्रॉब्लम इज फीसिबल. और अगर फीसिबल कहीं फंसता है तो हम कितना डिलिमिट कर सकते हैं उसको. व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन. देयर इज डिफरेंस इन डिलिमिटेशन एंड लिमिटेशन. Delimitation is when you start with your problem. Like my study, I have done it on Lucknow city. So that is a delimitation. वो मेरी study का delimitation है कि based on only on Lucknow city. And what is the limitation? If I do the study later on, I can come to know. Later on, I can come to know that मेरा थीसिस करने के बाद मुझे पता चलेगा कि मेरे थीसिस में क्या क्या प्रॉब्लम थी. आप कोई भी रिसर्च पेपर उठाएंगे, कोई भी रिसर्च पेपर, उसके एंड वाला जो पैराग्राफ होता है उसमें एजुकेशन implications होते हैं. Then it also contains from where the who has funded the project, and it also contains limitations. Limitations बताता है कि मेरा इस काम में limitations क्या थी. वो limitations तो आपको काम कंप्लीट करने के बाद ही पता चलेगी ना. अब आप थर्ड फ्लोर सीढ़ी से आएंगे तो क्या लिमिटेशन पता चलेगा आपको. चलिए अपने घुटनों का लिमिटेशन पता चलेगा ना. When you will cross this thing, then only you will realize it. So after doing research, you come to know the limitations. So, but before that, आपको थोड़ा विजन रखना चाहिए कि कहाँ चीजें फंस सकती हैं. You should be aware of the restrictions. Plus, you can delimit the things. कि मैं इतना सारा रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, मैं पूरी इंडिया में नहीं कर पाऊंगा, मैं एक लिमिट पे कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे वर्क करूंगा, उसी प्रोडक्ट पे वर्क करूंगा. You need to delimit yourself. Then next is state the research problem and prepare the research design beforehand. एक रफ रिसर्च डिजाइन आपके पास होना चाहिए कि हाउ यू आर गोइंग टू वर्क. So if you are not aware what research design is, so you won't be able to prepare the rough draft. Research design क्या होता है? What are the different types of researches? What are the different approaches? What is population sample? What type of statistics you need to use? Fine. What type of model you will prepare? आप कौन सा उसको फ्लो चार्ट लगाएंगे, कैसे वो वर्क करेगा, वो सब आपको कैसे पता चलेगा. Until and unless you don't have the theory of research design. Research design होता क्या है और आपकी रिसर्च कौन से टाइप की है, whether it's descriptive, historical और experimental, है ना. तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना जरूरी है बिफोर हैंड. तो दिस मच पार्ट क्लियर. I hope by hook and crook you can now define your problem. You have to do it. There is no other option. Fine. Now a little bit more about how you have to do the reviews. रिव्यू करने के पहले आपके पास टाइटल ऑफ द स्टडी होना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट रिव्यू इन टर्म्स ऑफ योर चैप्टर 2 ऑफ योर थीसिस. ठीक है. टाइटल स्टडी टाइटल फाइंड करने वाला रिव्यू की बात नहीं कर रही मैं. फाइन. अब आपको रिव्यू कर रहे हैं. when your title is ready and we are doing review related to आपका first RDC after your topic finalization पहली RDC होगा. You should be clear with the objectives, hypothesis, and now you you should know कि review of related literature करना कैसे कहाँ करना है. So these are the points. If it is not you're not able to see, I'll just say what are the things. While doing the review of related literature, that means now I am talking about review of your literature of your study, right? So authors you need to mention. हर study का, ठीक है? Know that every study should have authors.
और कुछ दो तीन चार पाँच जितने भी होते हैं, then here the study is done in which year? So you need to take the new studies or old studies. Studies research papers new लेंगे, books और किताबें जो पढ़ रहे हैं आप लोग उसके नॉलेज के लिए introductory books or advanced books that you can take for one already good. Then you need to mention the category of study. Then what is the source? Whether it's thesis, it's article, it's introduction, it comes under book, it is coming under unpublished data or published data or statistics of the government. वो आपको mention करना है. Then you need to mention the objectives of the study. उस study के क्या objectives हैं? जो पेपर को आप पढ़ रहे हैं उसके objectives क्या हैं? उसने कौन सी मेथोडोलॉजी लगाई, उनकी फाइंडिंग्स क्या थी, उनकी लिमिटेशंस क्या थी और उनके फंडिंग एजेंसी कौन थी। और आप जब ये रिव्यू करते हैं तो आप उसमें डेट भी लिख दीजिए कि आपने ये रिव्यू कब किया है। एंड इट्स गुड इफ यू डाउनलोड दैट पेपर, वो पेपर को डाउनलोड करके अपने रिकॉर्ड में मेंटेन करें, क्योंकि किसी बार आर्टिस्ट की वजह जाते हैं तो आप तो ये पेमेंट पेमेंट कर देंगे, तो देखिए आज क्योंकि आपने कितना लिख what are we to do? So you should have some trace of that. Basically, we have to do. So this is review how you can present this thing. Yes. This is that will depend on your guide, how your guide is supervisor is guiding you, see how you have to present. But these are the basic things it should be there in the book. Again, there are two things: how you have to present and how you have to write it in your thesis. Thesis में लिखने का तरीका अलग होता है. It's a paragraph form, and you have to write it in a running format. Management की tools का अलग रहता है, humanity की social science का अलग रहता है. Sciences you can take a guidance from your supervisor. How you have to write, or you can always check the previous work of the same university in the show program, how they have written. At the end, it is very important to identify the research gap. अभी तक तो जो existing था वही पढ़ रहे थे, but आपको क्या करना है, आपको कुछ और काम करना है, तो आपको research gap identify करना है कि yes, this work has to be done and this is not done as per your knowledge and skill. Okay? Research, yes, see, वेरिएबल पे आप रिव्यू करेंगे, लेकिन जैसे ऑनलाइन क्लासेस एक वेरिएबल, एटीट्यूड टुवर्ड ऑनलाइन क्लासेस एक वेरिएबल, राइट? बट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? एटीट्यूड एटीट्यूड टुवर्ड ऑनलाइन क्लासेस और टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स स्टडी। जहाँ पर मैं टारगेट ग्रुप भी ऐड कर रही हूँ, जहाँ पर हो सकता है कुछ और वेरिएबल्स भी ऐड कर रही हूँ। मेरी स्टडी में बताई तो एक वेरिएबल ऑनलाइन क्लासेस एटीट्यूड और टारगेट ग्रुप में तीन। तो व्हाट टारगेट ग्रुप क्या टेकिंग स्टडी कर रहे हैं, वेरिएबल्स यू कैन टेक टू ऑल्सो। तो लेटर ऑन यू कैन एक्सप्लेन कि ये दिस कॉम्बिनेशन इज नॉट, इस पर काम नहीं हुआ, तो आप उस पर काम करना चाहिए। क्लियर? तो रिसर्च गैप को लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आफ्टर कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ टीचिंग स्टडी, तो आपने स्टडी किया और आपने फाइंड किया कि हम इस टॉपिक पे काम नहीं हुआ। जैसे कोई भी जो नया रिसर्चर होगा ना, वो हमेशा नहीं कहता है कि इस पर तो कुछ काम नहीं हुआ, हम सारे स्टूडेंट करेंगे। मैं जब मेरा एमएड का डिसर्टेशन था, मैंने हमारी गाइड सुपरवाइजर से बहुत देर बात करी, मैम इस पे काम नहीं हुआ, इसमें सारे स्टूडेंट करेंगे, ठीक है, इस पे काम नहीं हुआ, उसमें बहुत कुछ काम हो चुका होता है, आपको भी प्रूफ बताना है कि इस पे काम नहीं हुआ। क्लियर? इसलिए ही हम रिव्यू को कैटेगराइज नहीं करते कि ऑनलाइन क्लासेस साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी एरिया में हुआ है, इन बच्चों का ये हुआ है और इन्हीं एरिया पे काम हुआ है। हाँ, इस एरिया में काम नहीं हुआ है, इस टॉपिक में काम, इस टारगेट ग्रुप पे काम नहीं हुआ है। साथ साथ में आपको बताना है कि ये काम करना क्यों इम्पोर्टेंट है, व्हाई दिस वर्क इज इम्पोर्टेंट, why your work is significant
what is the need and significance of the work. You need to justify. You need to give justification of the problem. कि why you are doing this work. आपके काम से किसको कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है? जब कुछ भी काम करोगे तो फायदा जो होगा वो स्टैंडर्ड कॉमेडी हो जाएगा दूसरों के लिए, ठीक है? होता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू आंसर बिकॉज द डिफेक्टिव चीज स्टार्टिंग से ही है ना, डिफेक्ट स्टार्टिंग से ही है, स्टार्टिंग से लीनियर हो गए, कितनी भी मेहनत करके करेंगे लेकिन काम अच्छा करता है क्योंकि तो आप पे 2 लाख 2.5 लाख पे करेंगे ना, तो डोंट डू एनी ऐसे ही फालतू वर्क मत करिए, ठीक है? एजेंसी से काम करवाने का ये वो नहीं, खुद काम करिए बिकॉज don't spoil the future of the research college which will be coming in the future. ठीक है? आप तो भाई आप पीएचडी कर लेंगे, आपके अंदर रिसर्च कॉलेज तो उनका जीवन मत बर्बाद करो, आपकी तरफ से पढ़ाई करो, ठीक है? वो क्या सीखेगा आप, ठीक है? So research gap you need to identify and you need to define it very precisely कि क्या research gap है and why I am doing this work. So this was all about today's class. Any questions if you have you can ask. Yes. Yes. Any questions? Monograph is something which is an replica. एक चीज को आपने दूसरे तरीके से दूसरे फॉर्म में कर दिया, थीसिस होती थीसिस, थीसिस बन गई, ठीक है? उसको मैंने बुक फॉर्म में डाला, इसका monograph, it's not required, it's not needed. उसको मैं 2 जगह पे लिखूंगा, दूसरी साइड का सिर्फ पेपर पे and I can change the whole, I can all do the calculation of the schedule. So this is common with the discussion. That is basically what. Yes. Any questions? Yeah. Yes. So, how you will identify the problem? We have discussed. Just note down the variables which you are finding, various variables from which things you are going to study. Yes. Before we explain the orientation program, you are there for the orientation. You can ask the Lalita will be sharing the link. If there is a issue, so you can go because you are asking one question, then there can be several questions. So you can get answers of them. So we were having that YouTube link. You can ask it directly. What's the issue? Yes. So you can do first practice right now. Yesterday we had done, we have googled what is the latest trend in your domain. But now you have to find the latest trend in your trust area. जो आपने पेपर 3 ट्रस्ट एरिया सिलेक्ट किया है और if you are interested in any other trust area, you just find the what are the latest trends going on. Latest trend of 2020. तो गूगल करके फाइंड करिए. Then you search new variables. Do it now, everyone. Or you can anyone can give their trust area. You can do it on this projector. आपका कौन सा एरिया है, आपका डोमेन कौन सा है? सोशल साइंसेस के स्टूडेंट रेंज एंड आप
ह्यूमैनिटीज से एजुकेशन आपका कौन सा सब्जेक्ट है साइकोलॉजी ओके यू आर सिलेक्टेड एनी वेरिएबल just search and try to find out what's your आपका बायोसाइंस आपने कुछ वैल्यूज सोचा है so just check out Google Scholar पे you can check what type of work is being done you can research gate पे प्रोफाइल people have made yesterday मैंने आपको कहा था research gate पे you have to make a profile you can find many latest studies in that also so I am also searching मैं सर्च करती हूँ एजुकेशन साइकोलॉजी पे व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स गोइंग ऑन See, such a new concept, students teaching teachers. ये देखिए see isn't it the latest thing students teaching teachers जापान में ही चल रहा है इस पर भी कुछ काम किया जा सकता है See, such a new concept students teaching teachers अब ये सोच सकते हैं ऐसा होगा please there in Japan so why is it there? Because teachers constantly improve and change their style of teaching based on student performance and reaction to it. Teachers का teaching style भी change होना जरूरी है. It's a क्या? हाँ इससे teaching और learning दोनों improve. वो तो हाँ स्कूलिंग टीचर बोलते हैं बट वो तो उनका प्रोफेशन में तो यही क्यों लग रहा है हाँ yes it's there then what else is there team teaching it's not that new individualized instruction ये भी है mixed age teaching this is also a new concept mixed age teaching